revise what we have done in the previous lecture, students, and then we can get started with the next part of the lecture, right? Let me share screen with you all. Okay. I hope you are able to see the screen, students. All right. What I'll do is, okay. So here we go. Okay. Let us quickly revise, students, what we have seen in the previous lecture, and then we can move with the next part of the lecture. Right now, students, let me tell you something. ये जो lecture है ना, students, इसका related lecture या इसका related topic आपको next year भी आने वाला है. So what I would recommend is try to pay attention on the ray diagrams, try to pay attention on the concepts which we learned today, because again you're going to encounter these terms again in the next year in the chapter lenses, students. So let us get started with the lecture, students. Let us now talk about the spherical mirror. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स कि मिरर का अगर कर्व सरफेस रहेगा, अगर मिरर का कर्व सरफेस रहेगा, सो दैट इज अ स्फेरिकल मिरर which which we have from a transparent hollow sphere, right? So if you talk about a concave mirror, students, concave mirror में inner part reflecting surface होता है and convex mirror में outer part reflecting surface होता है, students. In concave we talk about cave, मतलब inner part is reflecting, convex में outer part is reflecting, students. Then, students, we also saw that concave mirror. Concave mirror is which kind of mirror, students? Converging or diverging? Concave. Hint देता हूँ आपको. Hint में C याद रखा था अपन ने, students. Concave mirror is converging or diverging, students. That's correct. Concave mirror is a converging mirror because वो reflected rays को converge करके एक point पे meet कराता है, students. Whereas convex mirror is diverging mirror, students, because वो सारे के सारे incident rays को after reflection अलग अलग लोकेशंस पे डाइवर्ज कर देता है, स्टूडेंट्स, एंड हेंस वी कॉल कॉन्वेक्स मिरर एज अ डाइवर्जिंग मिरर, स्टूडेंट्स. अच्छा, मूविंग ऑन, स्टूडेंट्स, वी आल्सो अंडरस्टूड फ्यू ऑफ द कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू द spherical mirror, students. So the first common term we understood was the center of curvature. अभी center of curvature मतलब क्या, student? Center of curvature is the center of the sphere. Center of curvature is the center of the sphere. And students, ये sphere का part कौन है? Concave and convex mirror ये sphere का part है, students. So how do I define the center of curvature? It is the center of the sphere whose mirror is a part. The center of the sphere whose mirror is a part. So that is a concave center of curvature, students. अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो स्फीयर का रेडियस होता है, स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्टूडेंट्स. एंड ये जो मिरर्स है, दैट इज द पार्ट, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ दैट मिरर, स्टूडेंट्स. उसके बाद हमने, स्टूडेंट्स, थर्ड कॉमन टर्म देखा था, विच इज नथिंग बट पोल. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज पोल, स्टूडेंट्स? व्हाट इज पोल सेंटर ऑफ? पोल इज सेंटर ऑफ. व्हाट इज पोल सेंटर ऑफ, स्टूडेंट्स? द पोल इज सेंटर ऑफ अ मिरर. दैट्स करेक्ट. अगर ये कॉन्केव मिरर होगा, स्टूडेंट्स, तो कॉन्केव मिरर का जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, या कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर पॉइंट, स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट द पोल, स्टूडेंट्स. सो सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, स्टूडेंट्स, लेटर पी. ऑल राइट. अच्छा, चलो अभी नेक्स्ट कॉमन टर्म जो हमने देखा था, स्टूडेंट्स, द लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, स्टूडेंट्स. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको, स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल एक्सिस. सो द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. सो दीज वर द फोर कॉमन टर्म्स, स्टूडेंट्स, which we saw in the previous lecture. And now let us get started with the next common term, students. अच्छा, अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग ना प्रिंसिपल फोकस क्या है वो समझ के लेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, स्टूडेंट. अगर प्रिंसिपल फोकस क्या है वी अंडरस्टैंड, डेफिनेशन लर्न करना एंड याद करना इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिंपल, स्टूडेंट्स. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस. अच्छा, प्रिंसिपल फोकस, स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर का भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर का भी होता है, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे, ठीक है? नाउ quickly what I'll do is I will draw a figure, students.
सो ये ऐसे एक लाइन है. व्हाट इज दिस पी स्टूडेंट्स? व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर? याद करो, चलो फटाफट याद करो. व्हाट इज दिस पी स्टैंड्स फॉर? दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स. पी स्टैंड्स फॉर पोल. तो स्टूडेंट्स पोल पे अपना मिरर होगा. पोल पे अपना मिरर होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द मिरर. राइट. अच्छा, अगर ये पॉइंट सी है, व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स? व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर? सी मतलब क्या? सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. दैट्स करेक्ट स्टूडेंट. सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये लाइन कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? सी एन पी से जाने वाला लाइन कौन सा हुआ? सी एन पी से जाने वाला लाइन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल एक्सिस. राइट. अच्छा, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हिच इज दिस मिरर? ये देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है स्टूडेंट्स. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनसाइड. व्हिच मिरर इज दिस गोइंग टू बी? दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स, इट इज अ कॉनकेव मिरर. Right. Now students, I have a setup of a concave mirror, and what I do is I draw these lines. Now can you tell me what are these students? What are these? What are these? What are these? नहीं, these are correct. These are incident rays. Incident rays कैसे पता चला स्टूडेंट्स अपने को? ये जो arrow है ना, ये arrow is facing towards the mirror. Whenever the ray faces, whenever the arrow of a ray faces towards the mirror, students, हम लोग को इंसिडेंट रे है वो समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इंसिडेंट रेज. दीज आर द इंसिडेंट रेज. अच्छा, ये इंसिडेंट रेज कैसे स्टूडेंट्स? ये इंसिडेंट रेज, कैन आई से these incident rays are parallel to the principal axis? They are parallel to the principal axis, students. The incident rays are parallel to the principal axis. And which mirror are we talking about, students? Which mirror are we talking about, students? We are talking about a concave mirror. अभी यहाँ पे देखो, हाँ, ये जो जो मैंने बोला ना उसको मैं कंपाइल करता हूँ. यहाँ पे देखो, incident rays parallel to the principal axis of concave mirror, isn't it, students? Incident rays parallel to the principal axis of concave mirror. हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट याद स्टूडेंट्स. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, चलो दिमाग में रिकॉल करो स्टूडेंट्स. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? इंसिडेंट रेस parallel to the principal axis, parallel to the principal axis of concave mirror, students. देखो, incident rays parallel to the principal axis of concave mirror. Isn't it simple, students? अच्छा, अभी हम लोग आगे देखते क्या होता है स्टूडेंट्स. Now my question to you is, students, my question to you is, ये इंसिडेंट रेज जैसे ही कॉनकेव मिरर को हिट होंगे, रिफ्लेक्शन होगा. कॉनकेव मिरर को हिट होगी, रिफ्लेक्शन होगा. अच्छा, टेल मी स्टूडेंट्स, दिस कॉनकेव मिरर, इज इट कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, स्टूडेंट्स? दैट्स करेक्ट, इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर. तो स्टूडेंट्स, ये जो इंसिडेंट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज होंगे स्टूडेंट्स. all the reflected rays are going to converge. All the reflected rays are going to converge and meet. All the reflected rays are going to converge and meet at a particular point. Are they meeting at a particular point, students? Are they meeting at a particular point? Isn't it, students? So ये जो point है, ये जो point है, ये जो point है जहां पे ये इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट होते हैं स्टूडेंट्स, दैट पॉइंट, does it lie in front of the mirror or behind the mirror, students? Does it lie in the front of the mirror or behind the mirror, students? That's correct. This point, it lies on the front of the mirror. And ये जो particular point है students, हम लोग उसको बोलते हैं focus, principal focus of concave mirror, students. क्या बोलते हैं इसको students? We call it as principal focus of concave mirror. अच्छा, I'll repeat the definition, students. पहले मैं आपको ना डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, when then we will read the definition, students. ठीक है, चलो. सबसे पहले क्या था स्टूडेंट्स? इंसिडेंट रेज है. कैसे है ये इंसिडेंट रेज? दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, स्टूडेंट्स. ये इंसिडेंट रेज जैसे ही ये कॉनकेव मिरर को हिट होंगे स्टूडेंट्स, as they hit this concave mirror, students, they are going to reflect. And after reflection, students, since it is a converging mirror,
After reflection students, since it is a converging mirror students, ये सारे reflected rays क्या होंगे students? They will meet at a particular point. What are they going to do students? They are going to meet at a particular point. And ये point कहाँ पे है students? Is it in front of the mirror or is it behind the mirror students? It is in the front of the mirror students. कहाँ पे ये है particular point? This particular point is on the front of the mirror students. And ये जो particular point है उसको हम लोग बोलते हैं focus of concave mirror students. इसको principal focus क्यों बोलते हैं students? कैन यू टेल मी इसको प्रिंसिपल फोकस क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैन यू गेस क्यों बोलते होंगे इसको प्रिंसिपल फोकस? क्यों इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस स्टूडेंट्स? बिकॉज ये फोकस है स्टूडेंट्स वो प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होता है. बिकॉज ये फोकस किधर फॉर्म होता है? दिस फोकस लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट्स एंड हेंस वी कॉल इट एज अ प्रिंसिपल फोकस स्टूडेंट्स. इज इट सिंपल स्टूडेंट्स? So it is the definition students. चलो अभी ये read करो students. You are going to read it together students. चलो let us read it. 1, 2, 3, go. Incident rays parallel to the principal axis of a concave mirror after reflection from the mirror meet at a particular point in front of the mirror on the principal axis, and this point is called as principal focus of concave mirror. चलो अभी ना विदाउट देखे बोलने का कोशिश करते, ठीक है? चलो क्या था? इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. Incident rays parallel to the principal axis of concave mirror after reflection meet at a particular point in front of the mirror on the principal axis. This point is called as principal focus of concave mirror students. So students, ये definition दिमाग में बैठ गया students. Are you now comfortable with this definition students? Right? So this is the definition of principal focus of concave mirror students. ठीक है? All right. What you can do is I'll send you this photograph students. I'll send you photos of this particular notes. You can have it with you all. ठीक है? मैं आपको ये भेज दूंगा. I'll send you the image. The Nishan sir will forward it to you, right? All right. So now we have spoke about principal focus of concave mirror students. अच्छा अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? Now what are we going to learn students? Now we are going to learn the principal focus of convex mirror students. ठीक है? Now we are going to learn the principal focus of convex mirror students. ठीक है? All right. Now let us look at the definition of principal focus. अच्छा, before looking at the definition, let us understand what is principal focus of convex mirror. ठीक है? So now what I do is ये straight line निकाला. Can you guess what is a straight line students? This straight line is going to be the principal axis. That's correct students. It is going to be the principal axis. अच्छा, ये point कौन सा है students? P point. What is P point students? P point is pole. That's correct. P point क्या है students? P point is pole. अच्छा, pole के ऊपर मैंने ऐसा मिरर निकाला and slanting lines अंदर की तरफ डाला students. Slanting lines अंदर की तरफ डाला students. Right? So that is going to be a convex mirror. That's correct students. And यहाँ पे ऐसे कोई एक point C है students. यहाँ पे एक point C है students. What is that point students? That point is center of curvature students. Right? All right. Very nice. चलो अभी जैसे हमने students यहाँ पे देखा, what did we consider students? We considered incident rays parallel to the principal axis. What did we consider? We considered incident rays parallel to the principal axis, isn't it students? यहाँ पे भी students, what I'm going to consider is I am going to consider incident rays. कैसे है ये students? कैसे incident rays है ये? How are these incident rays students? These incident rays are parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis for convex mirror. Can you see the first statement students? Incident rays parallel to the principal axis of convex mirror students. ठीक है? अच्छा, after reflection क्या होता है देखते हैं.
आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ स्टूडेंट, ये कन्वर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग मिरर है? Convex mirror, is it a converging mirror or a diverging mirror? It's a diverging mirror. So definitely all I know is ये जो reflected rays है वो क्या होंगे? ये reflected rays students, they are going to go in different directions students. They are going to diverge. The reflected rays, they are going to diverge. They are going to go into different directions. So my question to you is students, will these reflected rays ever meet? Will these reflected rays ever meet students? No, these reflected rays are never going to meet students. But what if, but students, what if मैं ये reflected rays को ऐसे extend करने का कोशिश किया students? Reflected rays को मैंने extend करने का कोशिश किया, ऐसे reflected rays को मैंने extend किया. Will they appear to meet students? Will they appear to meet or will they actually meet? Will they appear to meet or they actually meet students? They will appear to meet students. They will appear to meet. वो actually नहीं मिलेंगे. Actually कहाँ पे मिलेंगे students? Actually concave mirror में मिलेंगे. But convex mirror में students, these reflected rays, they will appear to meet the reflected rays. They will appear to meet students. The reflected rays will appear to meet. अच्छा, now tell me students, these reflected rays will meet in front of the mirror or behind the mirror students? These reflected rays will meet in front of the mirror or behind the mirror students. That's correct. These reflected rays ये कहाँ पे मिलने वाले हैं? They are going to meet behind the mirror. And ये जो point पे meet करने वाले हैं students, this point is called as focus of the convex mirror. And since students ये focus प्रिंसिपल एक्सिस पे लाए होता है, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं स्टूडेंट्स. सो कैन वी रीड द डेफिनेशन स्टूडेंट्स? नाउ द डेफिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, राइट? व्हाट इज द डेफिनेशन? इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of convex mirror. Now we are talking about convex mirror students. After reflection students, after reflection क्या करने वाले स्टूडेंट्स? वो एक्चुअली मीट होने वाले हैं? नहीं, वो क्या करने वाले हैं? They are going to appear to meet students. They appear to meet at a particular point students. They appear to meet at a particular point. अच्छा, ये point कहाँ पे लाया होता है? Particular point behind the mirror students. This particular point is behind the mirror on the principal axis, and this point is called as principal focus of convex mirror students. तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट होते हैं या जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट होते हैं स्टूडेंट्स, वो पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. आई विल रिपीट अगेन, व्हाट डिड आई से? जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं या वो अपीयर टू मीट होते हैं स्टूडेंट्स, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स या कॉन्केव मिरर respectively. ठीक है? So that is the definition students of principal focus. Principal focus is given by capital letter F students. Principal focus माने क्या? Principal focus मतलब capital letter F. ठीक है? All right. Now students, my question to you is, can I touch this focus? ये जो focus है मिरर के अंदर जो focus generate हुआ है, can I touch this focus students? No, I cannot touch this focus, isn't it students? So my question to you is, ये कौन सा फोकस होगा? इफ यू कैनॉट टच दिस, इफ यू कैनॉट सेंस दिस, इफ यू कैनॉट फील दिस फोकस, कौन सा फोकस होगा? याद करो जरा. करेक्ट स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू अनटचेबल नहीं, इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल फोकस स्टूडेंट्स. व्हाट इज इट गोइंग टू बी? वर्चुअल फोकस. सिर्फ आप उसको देख सकते हो, isn't it students? So the virtual focus, it is a virtual focus. Convex mirror का focus is a virtual focus students. And can you actually have this focus? Can you actually have this focus on a sheet students? Yes, you can actually have this focus. You can actually feel this focus. यहाँ पे अगर पेपर रखा स्टूडेंट्स तो पेपर जल जाएगा. आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से किया है ना स्टूडेंट्स? ये magnifying glasses students, have you burned the paper using magnifying glass students? Similarly, if you place a paper on this focus students, because of the concentrated sun rays students,
the paper is going to burn. The paper is going to burn. Right? So students, ये जो focus है, is it going to be a virtual focus? Is it going to be a virtual focus? नहीं, ये focus होगा real focus students. कौन सा focus होगा students? It is going to be a real focus. So concave mirror का focus is real focus, whereas convex mirror का focus is a virtual focus students. Convex mirror का focus is a virtual focus. ठीक है? All right. Now let us come to the next common term, which is again an interesting common term and a very simple common term, students. पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस जो होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. व्हाट डू वी कॉल इट एज स्टूडेंट्स? वी कॉल इट एज फोकल लेंथ. P से लेके F तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, which is given by small letter f, students, which is given by small letter f, right? So focal length is the distance at which the reflected rays meet or they appear to meet, students. ठीक है? It is a distance. It is a distance at which reflected rays meet or they appear to meet. Or in simple terms, students, the distance between pole and the principal focus. क्या आएगा यहाँ पे students? The distance between the pole and the principal focus. Principal focus is called as, and the principal focus is called as focal length, students. ये नाम सुना है कभी focal length, students? Yes, lens का भी focal length होता है. Have you heard about it, students? जिनको चश्मा होता है ना, you must have heard this term focal length, students, right? All right. So this is about the focal. This is the concept of focal length, that is distance between pole and principal focus, students. Acha. Can you guess and tell me, students? Can you guess and tell me? P से लेके C तक का distance क्या होगा? Think about it. Think about it, students. Think about it. What is going to be the distance from P to C? क्या बात है आदित्य, वेरी नाइस आदित्य, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. The distance between pole and center of curvature is actually radius of curvature, students. क्या होता है वो radius of curvature? Very nice, students. What is it, students? It is called as radius of curvature. तो pole से लेके center of curvature का जो distance होता है, that is nothing but arc, students. What is it called as? It is called as arc, that is radius of curvature. And we have a relationship between, F and R. We have a relationship between F and R. What is this? What is this F, students? ये क्या है? ये छोटा f क्या है? छोटा f is focal length. Focal length. And ये capital R is radius of curvature. The relationship is focal length is half of radius of curvature. Focal length is half of radius of curvature. मतलब focal length radius of curvature का आधा होता है. Focal length radius of curvature का students कितना होता है? Half होता है. कितना होता है students? It is half. So my question to you is, my simple question to you is, focal length 2 सेंटीमीटर का होगा तो radius of curvature कितना सेंटीमीटर का होगा? That's correct. वो 4 सेंटीमीटर का होगा, students. It is going to be of 4 centimeter. If now the next question is, students, why half? Because beta it is found that ये जो focus point है ना वो बराबर center में ही generate होता है, students. It has been experimentally observed that ये जो focus point है ना, it is generated exactly between these 2 points. तो वो experimentally found है, ठीक है? All right. So now the next question is, अगर P से लेके F तक का डिस्टेंस, अगर P से लेके F तक का डिस्टेंस 8 मीटर है, स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम P to F इज 8 मीटर. व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस फ्रॉम P to C? P to C का डिस्टेंस कितना होगा? दैट्स करेक्ट, स्टूडेंट्स. इट इज गोइंग टू बी 16 मीटर, स्टूडेंट्स. तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ठीक है? दैट इज F इक्वल्स टू R अपॉन 2. I hope you understand the content of I hope you understood this common term, students.
If you understand these common terms, we can proceed with the next part of the chapter, students. ठीक है? All right. So we learned about six. We learned six common terms. The first is center of curvature, जो sphere का center होता है. Center of curvature is sphere का center. Second we learned was second we learned was radius of curvature. Sphere का radius. Sphere का radius is radius of curvature, students. Then we learned pole. Pole किसका center होता है, students? Pole is center of dash. Pole is center of mirror, students. That's correct. Then we learned about principal axis. Principal axis is a straight line passing through straight line passing through pole and center of curvature. Pole and center of curvature. Then we learned about principal focus, students. It is a particular point. प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या, पर्टिकुलर पॉइंट. कौन सा पॉइंट है वो, स्टूडेंट्स, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज आइदर मीट और दे अपीयर टू मीट. द रिफ्लेक्टेड रेज आइदर मीट और दे अपीयर टू मीट. आपको बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, फोकस करो पढ़ाई पे. आपको बोलते हैं ना, फोकस करो पढ़ाई पे, कॉन्सेंट्रेट करो स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या होता है, फोकस पे सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं स्टूडेंट्स. Often your parents tell you, concentrate on your studies, focus on your studies, isn't it, students? So focus is the actual term here which we use. Okay. And secondly, we spoke about, and the last one we spoke about was the focal length, students. Focal length matlab kya? Focal length matlab distance between pole and focus. Focal length is distance between pole and focus, right? So these are the common terms, students. Let me tell you something, students. These common terms you're again going to see in the next year, but instead of mirrors, we are going to see it for the lenses. So make sure you are very much comfortable with these common terms, right? Acha. Now, students, there's one topic which we are going to look into, which is nothing but the ray diagram. We are going to talk about ray diagram. ठीक है? तो रे डायग्राम क्या होता है उसके पहले, स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम नेचर ऑफ द इमेजेस व्हिच वी डेमोन्स्ट्रेट. ठीक है? सो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट नेचर ऑफ द इमेजेस. नेचर ऑफ द इमेजेस. ठीक है? ऑलराइट. द वेरी फर्स्ट नेचर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट is the virtual image. Virtual image. Nature of the image for spherical mirror we are talking about. We are talking about spherical mirror, students. So we are going to talk about what kind of images are formed in case of spherical mirror. उसमें से एक टाइप कौन सा है, students? Virtual image. अच्छा, tell me, virtual image में, students, where is the image formed? Inside or outside the mirror, students? Where is the virtual image formed? अगर virtual image form हुआ, कैसे पता चलेगा? That's correct. Virtual image is formed inside the mirror, students. Inside the mirror, students. Virtual image is formed inside the mirror. Achha, my question to you is, students, do you think reflected rays will actually meet to form virtual image? Do you think reflected rays will actually meet to form virtual image? No. The reflected rays, do they meet? Do not meet, students. Reflected rays नहीं मिलते. Virtual image में reflected rays नहीं मिलते. They do not meet, students. We are going to demonstrate these images, students. We are going to demonstrate these images. Don't worry, we are just going to list out the types of images first. फिर हम लोग उसको demonstrate भी करेंगे. I'll show you the images. ठीक है? All right. Yes, very nice, Kaushika. All right, चलो, moving on. Let us now talk about the second nature. अच्छा, virtual का opposite क्या होगा, students? Virtual का opposite क्या होगा? Very nice. Virtual का opposite is the real image, students. Virtual का opposite is the real image, students. Right? अच्छा, real image क्या होता है, students? Real image. Where is it going to be formed, students? अगर virtual image inside the mirror है, real image किधर होगा, students? That's correct. It is going to be in front of the mirror. It is going to be in the front of
मिरर स्टूडेंट्स। रियल इमेज कहाँ पे होता है? इट इज फॉर्म ऑन फ्रंट ऑफ द मिरर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप मूवी देखने जाते हो स्टूडेंट्स? हैव यू बीन टू अ मूवी? ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव सीन अ मूवी इन द थिएटर, राइट? अच्छा, मूवी में स्टूडेंट्स वो जो सिनेमा हॉल होता है, यू हैव अ स्क्रीन, राइट? स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से इमेज डेवलप होता है स्टूडेंट्स। Screen. On the screen, the projector develops an image on the screen, isn't it, students? तो वो जो इमेज जनरेट हुआ है स्क्रीन पे, दैट इज नथिंग बट अ रियल इमेज स्टूडेंट्स। दैट इज नथिंग बट अ रियल इमेज। सो रियल इमेजेस स्टूडेंट्स, रियल इमेज कैन बी developed on the screen, developed on a screen. रियल इमेज कैन बी डेवलप्ड ऑन अ स्क्रीन स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टर से स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टर से जो इमेज स्क्रीन के ऊपर जनरेट होता है, डेवलप होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, it is called as a real image. Don't worry, we are going to demonstrate what does this real image look like. And finally, students, tell me something. Do you think reflected rays are going to meet in real image? Do you think reflected rays are going to meet in case of real image? Yes, the reflected rays meet the reflected rays meet in case of a real image, students. So these are the points we are supposed to remember. Real image, it is formed in front of the mirror, it can be developed on the screen, and in real image the reflected rays actually meet to form the image, students. ठीक है, तो दो इमेज कौन से देखे? द फर्स्ट वन वाज द virtual image and the second one was the real image, students. ठीक है, all right, chalo. Next, students, next we saw see next we talk about another type of image, students. Next we talk about another type of image. You must have encountered such image in SL World ka mirror maze, maybe. We're going to talk about magnified image, students. Magnified image. अच्छा, what do you understand by magnified image, students? Magnified image में ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा, स्टूडेंट्स। मैग्निफाइड इमेज में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट छोटा, image is going to be bigger, students. Image is going to be bigger than the object. Very nice. Such image is called as a magnified image. Such image is called as a magnified image. I am pretty sure you must have seen this. I am pretty sure you must have seen this in SL World, students, isn't it? All right, chalo. Moving on, moving on. Let us now talk about the next type of image, students. Let us now talk about the next type of image. अच्छा, next type of image में students एकदम उल्टा होगा। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा। Object बड़ा, image is going to be small. And such kind of image, students, and such kind of image is called as diminished image. Diminished image, students. What is it called as? It is called as a diminished image. अगर object बड़ा होगा and image अगर छोटू सा होगा, students, we call it as a diminished image. Can you tell me where have you seen the diminished image, students? Can you recall, have you seen a diminished image? कहाँ पे देखा होगा आपने diminished image? गाड़ी का जो मिरर होता है ना, स्टूडेंट्स, गाड़ी का जो मिरर होता है, कार के साइड में जो मिरर होता है, स्टूडेंट्स, कार के साइड में जो आप इमेज देखते हो, वो कैसा इमेज होता है, स्टूडेंट्स? दैट इज अ डिमिनिश्ड इमेज, स्टूडेंट्स। द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल इज नथिंग बट अ डिमिनिश्ड इमेज, स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज अगर छोटा होगा, वी कॉल इट एज अ डिमिनिश्ड इमेज, स्टूडेंट्स। ठीक है, वी कॉल इट एज अ diminished image. And let us now talk about the next type of image, students. If you talk about next type of image, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा, ऑब्जेक्ट का इमेज भी सीधा। What do you think is this image? You have learned this, students. You have learned this. Object सीधा, image भी सीधा. Recall what is this image, students? Correct. What is this image, students? This image is a erect image, students. What is this image, students? That is an erect image. Very nice, students. So what is erect image? The fifth type of image is erect image. Plane mirror में पढ़ा है ना, students?
अगर ऑब्जेक्ट सीधा एंड इमेज भी सीधा होगा, it is called as a it is called as an erect image, students. If object is straight and image is also straight, we call it as an erect image. We call it as an erect image, students. ठीक है, erect ना, is this erect, students? Is this erect? No, this is erect. ठीक है, सीधा, right? All right. And finally, students, can you guess what is going to be opposite of erect image? Can you tell me what is then opposite of erect image? Lateral inversion nahi, students. Lateral inversion nahi. Lateral inversion matlab left ka right, right ka left. We are not talking about lateral inversion. We are talking about object सीधा, image ulta. Object सीधा, image ulta. We call it as inverted image. We call it as inverted image. What do we call it as, students? We call it as inverted image. Object सीधा, image ulta. Object सीधा, image ulta. Are we understanding this? So that image is called as an inverted image. What do we call it as, students? We call it as an inverted image. So what are the six nature of the images? Chalo फटाफट recall करो, students. What were the six nature of the images we learned? The first one was the first one was the first one was chalo fatafat. First one was virtual image. The first one was virtual image. The second one was the second one was real image. The second one was real image. Very nice. The third one was the third one was magnified image. Very nice. Magnified image. Very nice. Fourth one was fourth one was diminished. Magnified का opposite diminished image. Very nice. Very nice. अच्छा. Fifth one was fifth one was erect image. Correct. It is erect image. Object सीधा, image भी सीधा. And the last one and the last one and the last one is inverted image, students. And the last one is inverted image. That's correct, students. Achha. Let us demonstrate these images, students. Let us demonstrate these images, right? We are going to talk about these images. मैंने जो जो images बोले हैं ना आपको, let us demonstrate these images. Let me share a screen with you all, students. I'll share a screen with you all. All right. I hope you are able to see the screen, students. So can you tell me what is this image, students? What is this image? What is this image? देखो हाथ कैसा है, हाथ छोटू सा है. हाथ कैसा है, स्टूडेंट्स? छोटू सा है. बट ये जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कैसा है, स्टूडेंट्स? ये जो इमेज फॉर्म हुआ है वो बड़ा है. ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा, मतलब इट इज अ मैग्निफाइड इमेज, स्टूडेंट्स. हाउ इज इट, स्टूडेंट्स? इट इज अ मैग्निफाइड इमेज. ऑल्सो ऑल्सो स्टूडेंट्स, सिर्फ मैग्निफाइड है क्या? सिर्फ मैग्निफाइड इमेज है ये? लुक एट दिस इमेज, स्टूडेंट्स. इज इट बिहाइंड द मिरर, स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट बाहर है, इमेज मिरर के अंदर है, स्टूडेंट्स. व्हाट कैन बी द सेकेंड नेचर, स्टूडेंट्स? करेक्ट. क्या होगा ये, स्टूडेंट्स? वर्चुअल इमेज भी है, स्टूडेंट्स. इजंट इट? ये मैग्निफाइड है एंड ये वर्चुअल इमेज भी है. दिस इज अ मैग्निफाइड एज वेल एज अ वर्चुअल इमेज, स्टूडेंट्स. इजंट इट, स्टूडेंट्स? एंड ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है. मतलब क्या? थर्ड नेचर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, स्टूडेंट्स? व्हाट कैन बी थर्ड नेचर? The hand is straight and the image of the hand is as well straight. So the third nature is erect image, students. Isn't it, students? So these are the images which we understood, right? All right. Let us talk about the second image. Let us now talk about the second image. Look at this image, students. ये जो मिरर है, इसके अंदर देखो. इसके अंदर देखो. What do you see? You can see a man. You can see a car. You can see a lady walking, students. Isn't it? अच्छा, ये एक्चुअली सब छोटे छोटे है क्या? इंसान इतना छोटा है क्या? ये गाड़ी इतनी छोटी है क्या, स्टूडेंट्स? नहीं. तो ये कौन सा इमेज हुआ, स्टूडेंट्स? दैट्स करेक्ट. दिस इज अ डिमिनिश्ड इमेज. व्हाट इज दिस इमेज, स्टूडेंट्स? दिस इज एन डिमिनिश्ड इमेज. सब छोटा छोटा है, सब इमेज छोटा छोटा फॉर्म हुआ है, स्टूडेंट्स. आपकी कार में भी ऐसा इमेज फॉर्म होता है, इजंट इट, स्टूडेंट्स?
Acha, what can be the second nature according to you, students? Yes, it is also virtual image because ये सारा images students mirror के अंदर form हुआ है, so it is a virtual image. and and students ये erect image भी है because ये सारे images से सीधे form हुए हैं students, isn't it? Object भी सीधा है, image भी सीधा हुआ है students. So this is a virtual, erect and diminished image as well students. Are we understanding this? All right, let us look into the second. Let us look into the नेक्स्ट इमेज. कोई तो ये बता रहा था, ये कोई तो ये स्पून के पीछे वाले इमेज का बात कर रहा था. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. यू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स. सो इफ यू ट्राई टू सी, ये स्पून के पीछे वाला पार्ट है स्टूडेंट्स. एंड स्पून के पीछे वाले पार्ट पे स्टूडेंट्स ये लड़की का मुंह इतना सा है क्या, स्पून जितना है क्या? तो कौन सा इमेज हुआ स्टूडेंट्स ये? दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स. दिस इज गोइंग टू बी a virtual image. This is going to be a virtual image because the image is formed inside the spoon. Also, very nice students. This is a diminished image. इसका जो मुंह है that is actually bigger, but ये जो face का image form हुआ है, it is a smaller. This can accommodate into the spoon, students. So therefore it is a diminished image, students. And also it is an erect image, just like we saw in the previous example, students. अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला इमेज बहुत मस्त वाला इमेज है स्टूडेंट्स. जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट. टेल मी व्हाट इज दिस इमेज स्टूडेंट्स. Just observe this image properly, students. What do you think is this image, students? That's correct, students. देखो कौन सा इमेज है ये? This is an inverted image, students. What is this image, students? This is an inverted image. Actually, tower is straight. Actually, tower is straight, but the image formed by this sphere is inverted. देखो tower उल्टा दिख रहा है इसमें. So this is how the inverted image is formed, students. ठीक है? So this is an example of inverted image, students. And the last one is, can you see this image developed on the screen, students? We are using lens here, but ये lens ने देखो जो image बनाया है students, did I develop it on a screen, students? Did I develop it on a screen, students? कौन सा image होगा students ये? यहाँ पे window है. We have a window on the other side, students. We have a window on the other side. And ये window का image, students, we developed it on the screen, students. We developed it on the screen, students. What do you think is this image, students? That's correct. This image is a virtual image, this image is a real image, students. What is this image, students? This image is a real image. So these are the examples of the nature of the images, students, which we saw in the explanation, students, right? So talking about coming back to the topic, students. All right, one second. Okay, so we understood the different nature of the images, students, right? We understood the different nature of the images. Okay. I hope you understood this particular part, students. Do you have any doubts? Any questions, students? Any questions? Any questions? All right. So that's it, students. We'll wind up here. I hope you understood each and every common term. What I'll do is, I will share a screen. I will share the images with you all, students, so that you can have a reference. Yes. Mulund से कोई someone have a doubt? किसने raise hand किया था? Someone raised hand, right? Shrivasi. Yes, beta. What's your doubt, beta? Sir, the magnifying glass that we use is spherical, no? Magnifying glass which we use, beta, that is a lens which we are going to learn in the next year. It is a Okay. lens actually. It's not a mirror, it's a lens. वो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे उसको. ठीक है? Okay, sir. काफी Thank you, sir. सिमिलर है. यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट ईयर. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. No problem. And any other questions, students? Any other questions? All right. So that's it for today, students. I'll share all the
points with you all. I'll share all the images with you all so that you can have a look, and we'll see you in the next lecture, students. Difference between, acha, the next time when you come, students, I want you to write the distinguish between concave and convex mirror, students. आपको मैंने इतने सारे points बताए. I told you so many points. I want you to list out the difference between concave and convex mirror and come for the next lecture, right? All right. Yes. So I'll see you in the next lecture, students. Thank you, everybody. We'll wind up here.